Hi guys and welcome back to the channel. My name is Rajiv. Uh, well, to begin with, the last 3 days, which is Friday, Saturday, Sunday, have not been the best for us. We all know what's currently happening with Aarey. So let me start with Friday. Friday, जब मैं Aarey से आ रहा था, I normally use Aarey every day for my work to come and go. So Friday night when I was coming back home from Aarey, I was stopped by the police and I was like asked कि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे रुकने का नहीं है. अब टू बी ऑनेस्ट तब मुझे क्लिक नहीं हुआ कि ये क्यों बोल रहे हैं एंड क्योंकि रात का टाइम था एंड आई जस्ट हैड टू रीच होम. सो आई वाज लाइक नहीं, मैं नहीं रुक रहा हूँ एंड आई लेफ्ट until I got to know on Saturday that why the entire thing was. There were actually people in Aarey, a lot of people in Aarey, a lot of police people, a lot of police vans who were there to cut the trees and people were there to stop them from cutting the trees. I mean imagine अगर आपको trees काटना ही है and if it is a legit way, आपको रात को ही क्यों करना है? They were in the night. A lot of policemen were in the night with a lot of police vans and cutting trees. Today is Sunday and if I'm right, almost 2,000 plus trees have already been cut. आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट 2,700 ट्रीज काट रही है, साइड बाय साइड 6,000 ट्रीज प्लांट कर रही है, 6,000 झाड़ प्लांट कर रही है. वेल लॉजिक सेज कि आप झाड़ प्लांट नहीं कर सकते, आप सीड या सैपलिंग प्लांट कर रहे हो एंड विद टाइम दे विल ग्रो इनटू ट्रीज. नाउ टाइम विल easily mean about 30 to 40 odd years because आरे का एक झाड़ is not less than 50-60 odd years old. Least I would say around 30-40 years old. So imagine अगर आप 6,000 seed saplings आज के डेट में प्लांट कर रहे हो, so for them to grow into trees will take how many decades plus the environment that the trees will grow in. I mean we humans at times face issues of asthma, claustrophobic. हम बहुत बार बोलते हैं कि हमको सांस लेने को नहीं होता and we visit doctors and all that, but हमारे झाड़ सारे उग जाएंगे no matter what, no matter however bad the climate is or the pollutants are. हमारे झाड़, because we are cutting the 2,700 trees today, within a few decades हमारे सारे झाड़ उग जाएंगे. and few decades मतलब सोच लो अगर एक झाड़ को 30 साल लगते हैं या फिर 20 साल, let's catch the least, एक झाड़ को अगर 20 साल लगते हैं to grow from a seed or a sapling to a tree, so catching a high success rate of 6,000 trees to grow from a seed or a sapling to a tree, how many years will it go? Easily we humans as on today जो आज के टाइम पे जी रहे हैं will be dead, gone and finished and those trees will come back at that time to us. मतलब आप एक कार शेड बना रहे हो जो ह्यूमंस के लिए है, जो हमारे लिए है, पर हम कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे नहीं चाहिए. ऐसा कौन सा चीज़ होता है कि जो बोलता है कि जो कार शेड है सिर्फ और सिर्फ आरे में ही बन सकता और किधर नहीं बन सकता? ये थोड़ा रिडिकुलस टाइप हो जाता है. यू कांट रियली डाइजेस्ट द फैक्ट दैट इन टुडेज डे एंड एज वेयर एवरीथिंग हैज़ अ प्लान बी, but when it comes to only making the car shed, it can only be made in Aarey. Why? Purely because the land in Aarey is absolutely free. Kanjum Marg was an option, but no, because litigation में है and they have to pay some paid disputes which is close to about 5,000 odd crores. So to save on that 5,000 odd crores, they are letting go of 2,700 trees which is much more valuable than 5,000 odd crores. But नहीं, free है तो चाहिए. अगर ये इसका भी कॉस्ट होता तो आई एम श्योर ये लोग आरे में नहीं आते. they've even imposed section 144. So just to tell you what section 144 is, correct me if I'm wrong, it is basically where in a particular area you can't have more than 4 people in surrounding that area, which is kind of inhuman. Aarey is not an area where आपको सिर्फ 4 लोग मिलेंगे. आपने लोगों को डिटेन भी कर दिया है. न्यूज़ में अमाउंट आ रहा है, न्यूज़ में काउंट आ रहा है कि इट इज़ अराउंड 29 ऑड पीपल दैट देव डिटेन्ड, बट यू कैन थिंक ऑफ रिकॉर्ड्स कितने लोग होंगे. यू थिंक आरे में जाके सिर्फ 30 लोग ने प्रोटेस्ट किया रहेगा? लाइक सीरियसली, मतलब आपने लोगों को झट से पकड़ के प्रोटेस्ट कर दिया. अगर यही आपको बोलोगे जो हाई एंड लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ने जाओ, नहीं अनट्रेसेबल है, नहीं मिल रहे हैं, मिल जाएंगे तब का तब देखेंगे, ऐसा नहीं होता है. राइट? मतलब समथिंग विच इज़ नेचुरल टू अस, we can't let that go because we want to make something which is like a man-made thing to us. One more thing which is very funny is that if we've seen, let's go back a few weeks, our honorable Prime Minister was talking about climate change. Now help me understand, but if you want to prevent climate change to a worse extent, trees play an important role along with the other natural elements. पर नहीं, हम लोग तो यहाँ पे झाड़ काटने पे तुले हैं कि हम लोग को तो झाड़ काटना है, हमने 6,000 झाड़ प्लांट कर दिया है, आपको 6,000 झाड़ क्विक मिल जाएंगे एंड
no issue at all. I understand metro is very important. I'm not against the metro, but it's really difficult to digest कि आज के day and age में सिर्फ ये कहना कि एक चीज़ सिर्फ यहीं पे बन सकती है बहुत डिफ़िकल्ट होता है. आज मेट्रो शेड बन रहा है, टुमारो अ बिग बिल्डर विल कम एंड से कि नहीं मेरा बिल्डिंग यहीं पे बन सकता है. टुमारो अ बिग एमएनसी कैन कम एंड से कि नहीं मेरा फैक्ट्री का यूनिट, मेरा फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ आरए में ही बन सकता है. स्लोली एंड स्टेडीली आरए which is like a natural resource to us will be human infested, and we all know once it becomes human infested, population आ जाएगा, again it will be crowded. For example, if you've heard of a place where I stay, Malad, अगर आप 20 साल पहले आओगे ना मलाड में, you'll find it like a hill station. I remember जब मैं अपने नानी के घर आता था मलाड में, and I used to tell my colleagues कि मैं मलाड जा रहा हूँ, they would be like ये कौन सा जगह है, and trust me, it was a hill station. It was very limited buildings and more of greenery around, and we would come over here to spend summer vacations so that we get good breeze over here. And what happened to Malad now? अगर आप आज के डेट में मलाड घूमोगे, लिटरली हर नुक्कड़ और गली में आपको एक बिल्डिंग दिख जाएगा. Why? Because it's human infested. Same thing will happen with Aarey. Aarey today is like a natural resource which helps us to prevent, to some extent, to bring the temperature down of the heat that we live in. अगर आप Aarey शाम को जाओगे 6, 6:30, maybe little later than that, just drive through Aarey. You'll feel the cool breeze, and the minute you come out of Goregaon, when you just reach Goregaon and you take a left or right, you'll feel the heat hitting you back. So that's the importance of Aarey. We can't just let Aarey go because कार शेड तो बनेगा सिर्फ Aarey में ही बनेगा. ऐसा नहीं होता है. आज के डेट में टेक्नोलॉजी सो एडवांस कि आप जो भी चीज़ बनाना चाहते हो ना वो हर जगह बन जाता है. अब पता नहीं क्यों उनको Aarey ही चाहिए. मे बी जस्ट बिकॉज दैट द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज़ एब्सोल्युटली फ्री, or maybe it's for some other reasons, God knows. Having said that, I'm of an opinion that metro is important, but if metro comes at the cost of nature and the cost of trees, then it is not. Obviously, because trees cannot be planted again. We can only plant seeds, and then obviously someone has to take care of that seed or the sapling, by giving it water or taking care of it. ऐसा नहीं होगा ना कि आप डाल दिया और छोड़ दिया और अपने आप झाड़ आ जाएंगे. Trees in Aarey were naturally grown. It's not that anybody went over there and put water on those seeds decades back, maybe 50-60 years back, और आज हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है by a cool environment over there. ऐसा नहीं है. But पता नहीं क्या हो रहा है honestly, and let's just hope for the best, that there is a solution and the trees that they've planted really come back to us, because trees have already gone. So there is no hoping for it that that some changes will happen or some changes could happen. Changes will not happen because the trees have already gone. Now we can only hope is that the trees that they've planted really are taken care of, and what they've given a commitment by saying that we've planted 6,000 odd trees, maybe more or less. All those trees are well taken care of and an environment balance is maintained. Yes, metro be equally important here, but again, my opinion completely, at the cost of nature, it's not important at all. Having said this, I look forward to your love in terms of comments and share. So please do watch the video, share the video, open for negative comments as usual for any, if any. Take care and have a happy week ahead. Thank you.